तो आपने डिक्लेरेशन लिया था क्या कि 7 साल तक इनके बारे में सुना नहीं गया, इसलिए इनकी सिविल डेथ घोषित की जाए? लोगों को लगता है कि कोर्ट का टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा घुमा लेंगे। सब वो हमने कि तहसीलदार साहब आपके ऊपर बहुत मेहरबान थे, नहीं हो सकता तो तहसीलदार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करेंगे इसमें, एंड दैट तहसीलदार शुड बी रिमूव्ड। हाँ, लक्ष्मी अनाम घर में ही जाती है, ग्राम पंचायत का सचिव भी जाएगा। दैट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट वर नेक डीप इन करप्शन। हाँ गौतम जी बताएं। आपका म्यूटेशन किस दस्तावेज के आधार पर हुआ है? सर ये इसका जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के आधार पे म्यूटेशन होता है? नहीं कहाँ सर, प्रावधान है? नहीं एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो उसके आधार पे म्यूटेशन कैसे हो जाएगा? नहीं, वो म्यूटेशन इसलिए हुआ कि वो ऐसा लिख के गई थी कि मैं तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, नहीं जा रही है, नहीं आई तो ये इनकी जमीन हो जाएगी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना म्यूटेशन हो जाता है। तो आपने डिक्लेरेशन लिया था क्या कि 7 साल तक इनके बारे में सुना नहीं गया, इसलिए इनकी सिविल डेथ घोषित की जाए? कि तहसीलदार साहब आपके ऊपर बहुत मेहरबान थे? सर वो कुछ भी वो नहीं, कानून जो है वो बताइए सर। अब जो आपके पक्ष में इनकी सिविल डेथ का डिक्लेरेशन था क्या? सर ऐसा तो नहीं था। नहीं था तो ये पिटीशन अलाउ होगी, आपका ये सब ऑर्डर क्वैश होंगे, ठीक है सर। चलिए आपका सर एक मिनट में ये जो अपना निवेदन करना चाहूँ जी। सर, ये जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, मैं जो आपसे कानून पूछ रहा हूँ उतना बताइए, आपका रिप्लाई देखने की आवश्यकता नहीं है। कानून क्या कहता है? कैन यू ऑब्टेन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल? इफ यस देन शो मी द लॉ। सर ये एग्रीमेंट जो था, हमें नहीं मालूम, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए, नहीं घुमाने की तो नहीं कोशिश होता मत करिए। वो, पिछली बार आप बहुत जो है भावुक होके बहस कर रहे थे, नहीं आप हमने अभी सही बहस बताएंगे नहीं। इसमें सर बहस हुई कहाँ अभी? पिछली बार जब ये नहीं आए थे तब आपने बहुत सारी आपत्तियां उठाई थी। नहीं चलिए कल आप खुद नहीं आए, सर हमने कुछ बोले, कल क्यों नहीं आए थे आप? कल सर रिक्वेस्ट नहीं किया था इसलिए नहीं आया था। अच्छा, 307 तो आप अपनी मर्जी से चलेंगे? 107 नंबर पे लगा था। हाँ तो इसलिए न इनके तरफ से डिस्प्ले में चलिए रिक्वेस्ट 4 बजे के लिए रखा था ना, फिक्स लिखी हुई थी 8 बजे, 4 बजे के लिए 8 बजे। आप लोगों को लगता है कि कोर्ट का टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा घुमा लेंगे। सर वो हमने ऑर्डर शीट नहीं check अगर आप नहीं देखें तो वो गलती हो गई, आपको गलती करने का अधिकार है। आपके सारे अधिकार है, हमारे सिर्फ कर्तव्य है। नहीं सर ऐसा नहीं। नहीं ऐसा ही है सर इसमें जो आज कानून बता, आप सिर्फ कानून बता दीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम। कानून अगर है जो कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर म्यूटेशन हो सकता है, उतना दिखा दीजिए, जजमेंट दिखा दीजिए। नहीं सर एग्रीमेंट के आधार पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो तहसीलदार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करेंगे इसमें, एंड दैट तहसीलदार शुड बी रिमूव्ड। लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड, दिस मिसलेनियस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of order dated 13/12/2021 annexure P7 being aggrieved of an order passed by the Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur in case number 1278/appeal/17-18 within bracket Kalavati versus Silochna, whereby appeal filed by Kalavati, who is petitioner herein, is rejected by the Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur. Next para. Petitioner, brief facts leading to the present case are that this appeal before the additional commissioner was filed by Kalavati being aggrieved of the order dated 17/5/2018 passed by the sub-divisional officer Shahpura, district Dindori in case number 123/6/16-17 treating the appeal filed by Kalavati to be time barred. Full stop. Next para. Brief facts leading to the present case are that admittedly Kalavati petitioner is a victim of series of frauds in which revenue authorities are deliberately becoming party, reflecting poorly on the functioning of the revenue authorities of the state. Full stop. Basic facts of the next para. Basic facts of the case are that one Abshiek Kumar, son of Ratiram Jharia, claimed title over the property of the petitioner contained in survey number 260,373,389 measuring 3.06 है? Yes sir. 3.06 hectares
which is recorded in the name of Kalavati as Bhumi Swami land. Full stop. This land was claimed by Ashok Kumar on the strength of some will which he got executed from Kalavati in his favor. Full stop. Thereafter, the respondent Srimati Sulochana, on the strength of an agreement while Kalavati was on a pilgrimage, obtained a mutation in connivance with the revenue authorities. And when Kalavati came back from the pilgrimage, she discovered this fact that Tehsildar had mutated her land in favor of Sulochana on the strength of a agreement to sell, filed an appeal before the sub-divisional officer, but sub-divisional officer, oblivious of his authority, acted arbitrarily. Full stop. This arbitrariness perpetuated up to the level of the additional commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, who is supposed to be a senior officer, knowing the law as well as being sensitive to the requirements of the common citizen. Next para. Unfortunately, all the three revenue authorities, that is the Tehsildar, sub-divisional officer and additional commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, acted in connivance to defeat the just and proper cause of Srimati Kalavati, who is the petitioner in this miscellaneous petition. Next para. Shri Gautam, when asked that under which provision of law mutation of a property can be obtained on the strength of an agreement to sell, Shri Gautam submits that such mutation was obtained because there is a stipulation in the agreement to sell that if the author of the agreement to sell, that is Srimati Kalavati, fails to come back from pilgrimage, then the intending purchaser will be entitled to get the property transferred in her name. Full stop. Next para. When Shri Gautam is asked to show as to whether his client had obtained a declaration of civil death of the petitioner Srimati Kalavati, so to act on the agreement to sell, then he submits that no such declaration was obtained. Full stop. Thus, it is evident that respondent Srimati Sulochana, exercising her dominant authority over the revenue officer, नायब तहसीलदार है जी, तहसीलदार डिंडोरी, Shaipura district Dindori, obtained mutation in her favor. Full stop. It is evident that said mutation की order की तारीख क्या है? सर 20/1/17 सर तहसीलदार आपका ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार इज डेटेड 20/1/17. फुल स्टॉप. तहसीलदार का नाम भी है क्या इसमें? नहीं सर, नाम नहीं. इनको मालूम होगा ना, नाम तो इन्होंने गौतम जी को. सर नाम तो नहीं मालूम. अच्छा, बिगर नाम के काम हो गया. अनाम चल रहा है सब. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. ग्राम पंचायत का जो लक्ष्मी अनाम घर में ही जाती है. सर ग्राम पंचायत का जो वो डॉक्यूमेंट आया था उसको एसडीएम ने कराया था, उसके क्या ग्राम पंचायत का क्या डॉक्यूमेंट आया था? सर ये इसका डेथ सर्टिफिकेट दिया था. और अच्छा लिखिएगा, एट दिस स्टेज श्री ग्राम पंचायत का सचिव भी जाएगा. सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत? ये बांके शाहपुरा डिंडोरी had given a death certificate of Srimati Kalavati. Next para. Thus, it is evident that all the functionaries of the state government, कलावती पुत्री नारायण ठाकुर, हाँ, कलावती daughter of late Shri Narayan Thakur, ऊपर जोड़ लीजिएगा, 2-3 जगह आया, वहां पर जोड़ लीजिए. Thus, it is evident that all the government officials and the functionaries of the state were neck deep in corruption and were bent upon to help Sulochana on the basis of forged and fictitious documents. Full stop. This is a serious matter. Full stop. Serious matter. Next para. As far as claims of Srimati Kalavati are concerned, since there is no legality in the order of mutation, which was admittedly obtained on the basis of a false death certificate, forged and fictitious death certificate of Kalavati, therefore, such mutation entries in favor of the respondent Sulochana cannot be given seal of approval. They are hereby quashed. Revenue authorities are directed to forthwith correct the revenue records in favor of Srimati Kalavati. Next para.
Superintendent of Police Dindori is Lord, sir, directed to register a criminal case Lordship, against the secretary and sarpanch of the Gram Panchayat who had issued the death certificate annexure R1. R1 in favor of Solochna, making Solochna also as an accused, and so also the concerned Tehsildar who had passed the order on क्या date है उसकी 20/1/17 हैं 20/1/17 20/1/17 as the Panchayat Secretary, Sarpanch, Srimati Solochna and the Tehsildar. They all are hand in glove and party to the conspiracy of fraud committed against the petitioner. Let this FIR be registered within 7 days and appropriate action be taken against the accused in terms of the law. Full stop. Shri Suyash Thakur will inform the Superintendent of Police to do the needful shall communicate the order and do the needful. Full stop. Next para. Copy of this order will also be supplied by Shri Suyash Thakur to the Principal Secretary Revenue, and who will in turn take departmental action against the concerned Tehsildar, Sub-Divisional Officer and the Additional Commissioner for being oblivious of the facts and acting in a blind manner. Let this action be also taken against the 3 incumbents who were holding the post at the relevant time within a prescribed time period of 90 days from the date of communication of the order under intimation to the court. Lordship, in as per Annexure A2, the earlier mutation was made in favor of respondent number 2. That is set aside by the SDM, in which it is also mentioned. वो तो अशोक कुमार का म्यूटेशन सेटिसाइड हुआ, एक फैक्ट वाली लीजिए. लेकिन इन्होंने Earlier SDM had set अशोक aside कुमार the ने इनको पहले वो मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, वसीयत के आधार पर नामांकन कराया, और फिर बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनवाए, लगाया. अच्छा किया. वो अशोक कुमार को भी रिस्पोंडेंट FIR वो अशोक सर हमारा कुछ नहीं सर, आप देख लें सर, जो ऑर्डर है सर इनका ही है, ठीक है, हमारे खिलाफ छोड़ दो अशोक कुमार को, छोड़ दो बस. चलिए, प्रेयर भी नहीं है सर. हो गया, चलिए, हो गया, चलिए. इसमें अशोक कुमार की सर का खुद का इसमें आया है सर. Petitioner will be entitled to recover cost of this litigation from Solochna, which is quantified at 10,000. काइंडली सी दी Annexure सर, चलिए, पेज नंबर 29 सर. प्लीज हो उसमें गया. इन्होंने नेक्स्ट खुद लिखा कि ये दे गई थी सर हमको, और हम देख रेख कर रहे थे सर. ठीक है. अशोक कुमार का कुछ नहीं ना सर, प्रेयर में भी है सर. जी. किसके लिए हैं आप? इसमें सुलोचना हैं? सुलोचना ये किसके लिए है? गौतम साहब किसके लिए है? गौतम साहब सुलोचना के लिए नहीं है क्या? सर कास्ट का न करते हैं, बाकी इंक्वायरी तो क्या हो गया? कास्ट नहीं, कॉस्ट रहेगी ना, FIR भी दर्ज होगी, कॉस्ट भी लगेगी. नहीं, FIR बिल्कुल बिल्कुल होने दीजिए, ठीक है. निवेदन किसके बिहाफ पे कर रहे हैं आप? फ्रेंड ऑफ सुलोचना. तो सुलोचना के बिहाफ पे तो वो खड़े हुए ना, गौतम साहब के नहीं खड़े हुए. इसमें 2 वकील नहीं अलाउ करते वकील साहब. आपको जो कहना है आप उनको कहिएगा. सॉरी, कास्ट छोड़ दिया. नहीं, कॉस्ट रहेगी, इंक्वायरी कॉस्ट रहेगी. और उसमें और एक लाइन जोड़ लीजिएगा, दैट पिटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द कॉस्ट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ इट इज नॉट पेड to the petitioner within 30 days from today.